पर जो है वो बहुत ज़्यादा वो एक एग्जाम्पल है। तो बाकी जो है आप लोग डिटेल के साथ जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू था हमारा जो सस्टेनेबल गोल था 9 और 11। थैंक यू सर आसिफ साहब। डॉक्टर रुबीना भट्टी जो कि डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है वो भी ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू मैडम फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आज का जो सेशन है जो हम पहले बता चुके हैं कि SDG 9 और 11 को कवर कर रहा है। 9 और 11 को एक तरीके से ओरिएंट सर ने किया। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि एक है ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, जो कि ये क्लेम करता है कि 3 ऐसे प्लेयर्स हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, अगर वो काम करें तो हम एक अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। उस पर उन्होंने नॉमिनेट किया है गवर्नमेंट को, उस पर उन्होंने नॉमिनेट किया है एकेडमिया को और किया इंडस्ट्री को। तो देखा जाए तो आज के जितने भी पैनलिस्ट हैं हमारे, या तो एकेडमिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक अच्छी फ्रूटफुल डिस्कशन होगी। हम चाहेंगे कि आप अपने इदारे को माइंड में रखते हुए इन सवालों के जवाब देंगे। तो जो पहला सवाल है जो कि मैं स्टार्ट करूंगा डॉक्टर रुबीना भट्टी साहिबा से। मैडम की काइंडली आप ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि IUB जो है वो किस तरीके से SDG 9 जो कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन की बात करते हैं हम, ये SDG 11 जो कि स्मार्ट सिटी या स्मार्ट होम की बात करते हैं, उसको हम कैसे फुलफिल कर रहे हैं? Thank you so much. First of all, I am very pleased to join all of you, and I appreciate SDG Jadeed and Bahawalpur for organizing this wonderful, great summit and conference. First of all, I would like to share the vision of this summit, the IUB. Most of you must be aware of that. The is province, H is honesty, E for equality, I for innovation, U for understanding, and B for beneficial. So if you see that vision, so most of the SDGs cover these areas, all these we do innovations and the equality and SDGs. Your question about the innovation and smart society and I'm very proud to share that IUB has taken. I can that if we talk about smart city, smart society, and smart business, IUB has worked on the initiative. We have got IUB project. We have got IUB solar park. And at the same time, we have recently established social private sector, and including we have that we have as Pakistan is so we need to focus about so as there are issue there is the issue of border solution there. So IUB is going to establish, and we are also working on artificial and different techniques. As we are in this area, we are taking this research center, we have interconnected research center, and I will study some other aspects of smart society. So we focus on preservation of cultural heritage. So in this regard, IUB has taken initiatives. Like we have nature, culture, and history. We are soon going to establish Pakistanis and art and civil. We have also chosen that and Pakistanis is available for that. And we're also working on the Pakistan gallery, and that will be preserve not only those cultural and national heritage of Pakistan. We will start with like industrial civilization, Hafra civilization, and civilization. As we're talking about civilization, we also have got Hafra and many people have appreciated that art and art gallery. I'm representing IUB. So academia wrote
very vital in this class. As we are teacher course for that going to join the commission, they are the they are the bigger difference. Inshallah. So like increase as the vice chancellor was shared that in the last 3 years, IUB has made tremendous progress. Went from 7 to 10 and 2,000 students to 7,000. The same pace, the departments and subjects increases. So as we started courses and subjects, so we focused upon delivering certain literacies because without the literacies, we are not going to go this just as we have said. And I would say that is the multi-stakeholder class. It's not that actually academic do that or the government do that. We have to do that, university have to do that, and civil society also has to do it, and public private partnerships. And I don't know this partnership at local level. I see this partnership as so we don't have to think only in perspective of our Punjab, Pakistan. We are the global family. So whatever we are going to do, at the same time, we are also looking at relevant activities. Obviously, accomplish the objective of sustainable societies and communities. As I was talking about delivering certain literacy, so I would say that information literacy is the biggest aspect. Other literacies are literacy, cultural literacy, environmental literacy. When I talk about literacy, it's not only about the environment, it covers everything. Not complex. Also need that and most importantly, we need to deliver civic and social literacy. And we must focus on that. So I we can support you providing data that will be and that would certainly help in establishing and further for policy making decision making. Not only local and thank you so much. थैंक यू मैडम, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में आईयूबी का रोल, एकेडमी का रोल को आपने प्रेजेंट किया। हमारे साथ अहमद जब्बार साहब मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जो कि प्रेजेंट कर रहे हैं इंडस्ट्री को। तो सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो बहावलपुर की इंडस्ट्री है, आप कैसे देख रहे हैं कि ये किस तरीके से रोल प्ले कर रही है इन प्रमोटिंग SDG 9 and 11? वो जो आपको कंफर्टेबल। उर्दू में कर लेते कुछ। Regarding Bahawalpur Chamber of Commerce and the people who are industrialists or traders or retailers in Bahawalpur, I think we have a long way to go. But for the sake of the matter, I think that we've got the right direction as of the last few years because there's a lot of young blood coming. हमारे बहुत सारे young लोग हैं जो obviously academia से भी और SDGs का मुझे तो सबसे पहले मैं इस चीज़ पे तस्वीर पेश करूँगा कि मैंने आज से 8 साल पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, उसकी आज पर भी एक डिस्कशन कर रही थी कि हम पहली दफ़ा मेरी नज़र में दुनिया की पैमाना है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो जहाँ तक दोनों SDGs का ताल्लुक है, entrepreneurship is obviously a domain and smart cities and smart places or smart ecosystems is a slightly different figure in my opinion. However, they do overlap, like you mentioned, and our colleagues are talking about this earlier on. Entrepreneurship के हवाले से I feel कि so many of our approach is very, very about this. There are
a lot of internal discussions that go on in our institute. There are a lot of entrepreneurship, and at the same time, I would like to state that there's a lot of entrepreneurship going on. I myself would describe myself as an entrepreneur rather than entrepreneur. Regarding entrepreneurship, the government has done a lot of good policies over the last 3-4 years, I must say, and your figures that you mentioned at the beginning do point in that direction. However, this needs this energy or this sense of trying to improve things in terms of entrepreneurship needs to be communicated to grassroots level. Unfortunately, I was just having a conversation with Syed कि हमारा जो education का system है, in my opinion, is unfortunately obsolete. हमारा जो entrepreneurship का जो brain child है या जो seed है वो ही नहीं बोया जाता एक छोटे पैमाने पे, क्योंकि हमें day one से जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पिछले 15-20 साल की तालीम जो है इस मुल्क में हासिल की, उसमें एक किताब के कागज पे जो लिखा हुआ है उसी को आपने रख के जो नंबर ले लिया आपने ले लिया, उससे आगे अगर आप उससे ज्यादा बेहतर कुछ लिखेंगे आपको सफर रिवाइज कर देगा. That needs to fundamentally change. हाँ, the people who do come up with ideas and who want to think about certain things in society, they are also already being welcomed, and I think this needs to go further. You mentioned that there's been about $3 to $5 million worth of investments in Pakistan through seed funding. $375 million, which is very, very positive, I think, and there's a long way to go. I think this number can easily touch $1 billion a year. जितने हमारा यहाँ पे पोटेंशियल है, और मेरे कोलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, वो जितने ओवरसीज और वो वहाँ पे जाके $multi-million कंपनी बना चुके हैं in the US and in the UK, तो वो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? Yes, there is one other thing that I would like to point out that I don't know who is representing the government here today. Can you please point out? नहीं, exactly government नहीं है, लेकिन जो हमारे admin office जो represent कर रहे हैं उनको हम consider कर रहे हैं. Exactly. I would just like to state that there's a lot of I would say कि थोड़ा सा ना mentality को change करने की जरूरत है from the government end, where we can also facilitate, जहाँ पे laws को थोड़ा amend, थोड़ा सा ecosystem बेहतर करने की जरूरत है, जहाँ पे क्योंकि एक है जो traditional businesses हैं वो been going on for generations for the last 30-40 years, जो traditional mindsets हैं. For entrepreneurship, you need a completely different kind of lens, you need a different kind of scope, and you need a different kind of mindset. यहाँ पे sorry, I'm taking too long. Number 11 की बात है regarding smart cities and smart systems. Fundamentally, you said, and we all agree on, that we need connectivity. Connectivity is through two things. One is infrastructure, it can be physical, and the other is digital infrastructure. Unfortunately, जहाँ हम बैठे हैं, हम एक ऐसी जगह पे हैं जो infrastructurally, physically भी थोड़ा disconnected है from the rest of the country, I must say, in terms of roads. What I'm trying to point out is motorway connectivity. We as a chamber, we have worked very hard on it. And I would like to proudly state that we have managed to get a two-way lane sanctioned for connectivity of Bahawalpur to bring it on par with Lahore, Islamabad, and Karachi. Regarding digital infrastructure, yes, we have a very long way to go. हमारे पास इतना बड़ा सहरान है और वहाँ पे हम हर साल एक इवेंट के लिए हम जाते हैं और हमें वहाँ पे सिग्नल्स का इशू होता है जहाँ पे 5 से 10 लाख लोग एवरेज वहाँ हर साल आते हैं. ये हमारे लिए लम्हा तिकड़ी है. इसके अलावा भी कनेक्टिविटी तो है, लेकिन बहुत सारे एरियाज हैं जो कि हम मतलब डेटा सेक्टर के लोगों से भी बात करें तो अभी तक सिर्फ 2G या इवन 3G की हद तक महसूस है. वी नीड टू स्टेप इट अप. आजकल दुनिया बिग डेटा और एनालिटिक्स की तरफ जा चुकी है और मेरी तालीम भी थोड़ी सी शोबे से है, तो वी नीड एटलीस्ट 4G और 5G कनेक्शन एवरीवेयर वेयर वी कैन एटलीस्ट get some kind of interconnectivity to build on digital infrastructure which brings about Internet of Things, smart homes, या नेट टेक कह लें, एड टेक कह लें, बहुत सारी चीज़ों में तब रेवोल्यूशन आएगा जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा. तो उस हवाले से अनफॉर्चुनेटली नंबर 11 पे तो हमारा फुल कंट्रीब्यूशन नहीं है डिजिटल टेक्नोलॉजी से, बट आई मस्ट से कि जहाँ तक आप कह लें रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह वी दिस लास्ट ईयर वी हैव ब्रॉट अबाउट एटलीस्ट 2 to 3 megawatts of solar and renewable energy in Bahawalpur, and that figure is expected to go all the way up to 10 megawatts within the next 1 year. तो ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज की शक्ल में हमारे जो कलीग्स हैं लोगों ने उन्होंने भावलपुर की इस चीज़ को नया भी है, and I hope this can continue further. Mr. Chancellor, in behalf of the act, sure, please. Digital की अगर हम बात करें तो I am representing Corbett as well. Corbett is an IT institute. Nobody knows what last
help of the chamber, because Kenya ने recognize किया first day, after 600 seats free for free education to the students having high level certification as a private institution. Right now we're delivering 200 students free of cost, Amazon, cloud computing, and CCM. This is our first phase, and we are almost 3 months old. That's why maybe Ahmed missed the phase. So digitally, we are building with the help of the chamber. Second thing is getting the things to the digital world. Pakistan needs data. Pakistan का data किसी के पास है. You can derive data from somewhere, according to expertise, but you cannot get a data that if I am selling watches, well, how many customers are there in this country who can buy watches? People are buying watches, but nobody has the data. Secondly, entrepreneurship की जो बात उन्होंने की, and academia की बात नाम की, education system भी की है, मेरी नजर में, because I'm also managing resource academia school, which is for Montessori school, managing a Concordia college, being a partner, थोड़ा सा हम भी देखते हैं. I was a teacher as well. I worked in the telecom sector. Problem कहीं पे भी कोई problem को connect नहीं किया. Problem connect क्यों नहीं किया जा रहा? Because every day population is growing. You are defining SDGs today in 2022. Agree? You will define it. I hope आप लगे मैं इंशाल्लाह एक साल का define कर लेंगे. But would you like to tell me कि उतने में population नहीं बढ़ी? Growing population is a problem here. उसके साथ फिर problems आते हैं. एक problems आते हैं, उसके लिए solutions हैं. So we need that academia and industry. Industry में हम लोग यहाँ बैठे होते हैं. Ahmed is running industry and I'm running colleges. With an experience of 8 to 10 years, we know the problem. The problems are that we don't have the time to solve this problem because it needs an analogy. जो 22 साल के बच्चे में 40 साल के बंदे में नहीं है. ऐसे ही है. आप हमें 22 साल का बच्चा दें, हम प्रॉब्लम बताते हैं. इंडिया हमारे पास बच्चा भेजते हैं. Like if you want, आपको यूनिवर्सिटी में कल से ऐलान करते हैं. If somebody wants to go into the PropTech, यानी कि हमें real estate as well. PropTech is the new thing जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. Proper PropTech is not in Pakistan right now. There is only one company which we are partnered with them. Is now PropTech. They have worked like they put the real estate data onto the blockchain. Blockchain is the securest ledger in the world. बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, बड़ा अच्छा उसका सॉल्यूशन दे दिया. पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी की बड़ी सिंपल चीज थी. पूरी दुनिया कर रही थी. क्रिप्टो का लेजर ब्लॉकचेन मेंटेन कर रहा था. उन्होंने उठाकर रियल एस्टेट का लेजर ब्लॉकचेन पे डाल दिया. एवरीबॉडी इज एग्रीइंग कि ये ठीक बात है, गलत बात नहीं. बट रेगुलेटरी स्टिल रेगुलेटरी बहुत मार रही है. बट जब लोगों की आप बड़े होते हैं, बड़ाई तो लड़ना बहुत मुश्किल नहीं होता. बहुत आसान ऐसे लोग मिल सकते हैं, गाइडेंस हो सकती है. सेकेंड थिंग इज हमारे स्टूडेंट के अंदर जो प्रॉब्लम हमें मिलता है वो ये कि वो नहीं से स्टार्ट करते हैं. कहते मैं ये नहीं कर सकता. अगर आप उस क्लासरूम में ये कहते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, let's enough leave it. Whatever the book he is reading, I have a mobile, I can get information all over the world. कोई of information is not the purpose of the university right now. Information is in your hands. Whatever subject you need. अगर मुझे पाकिस्तान में अच्छी सॉक्स लेनी है तो I don't have to go to the university. I can buy it from the उसी वक्त ऑनलाइन रेटिंग्स निकल आएंगी. I want to travel, इस किस्म की मुझे चीज चाहिए तो मोबाइल से निकाल लूंगा. If I want to learn Excel तो दो YouTube पर वीडियोस पड़ी है, 2 मिनट में आ जाएगी. So the thing is, we have to create problem solvers, not the problem creators. हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चल पड़े. Every person knows hundreds of problems which they face in the single day. जैसे सेशन को आगे लेके चलते हैं. आपने बड़ा अच्छा लिंक किया एकेडमिया और आपने कहा कि इंडस्ट्री का लिंक क्रिएट नहीं हो रहा. तो हमारे साथ डॉक्टर आबिद गिल साहब मौजूद हैं जो कि ग्रीन कैंपस के डायरेक्टर भी हैं और वो कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं. तो सर आप अपने एक्सपीरियंस में शेयर करें कि ये जो एकेडमिया और इंडस्ट्री पैचअप नहीं कर पा रही, क्योंकि आपने कई इंडस्ट्री को अप्रोच भी किया, वहां से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया. तो ऐसे कौन से इंडिकेटर्स आपको नजर आ रहे हैं कि जिससे इंडस्ट्री और एकेडमिया साथ नहीं बैठ पाती? क्या मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. हमने ग्रीन कैंपस प्रोजेक्ट में हम IUB के डिफरेंट जो इंडिकेटर उस पर काम कर रहे हैं. एक ट्रांसपोर्टेशन पे भी काम कर रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन में हमारा
ऑप्टिमल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी काम हो और कमीशन भी कम हो। जब हम साइकिल को प्रमोट करने लगे तो मेरे मन में आगे आया कि पाकिस्तान की साइकिल इंडस्ट्री को अप्रोच किया। जब साइकिल को प्रमोट करेंगे तो उनकी इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ाएंगे पार्टनर। तो मैंने नेट पे सर्च किया, मुझे 5-6 बड़े प्लेयर नजर आए, सर आप उनके आपस फोन किया, मुझे कोई वहाँ से फिर मैं में जो बड़े बड़े डीलर थे उनके पास आपके पास होना, उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल स्टोरी किस तरह आपका है कि वो बहुत हो गया, बच्चे वो अब शैटर्ड है। एक दूसरे नंबर पे और आ रहा सोनी इस तरह का नाम, उनको किस तरह माल को मैंने ट्रेस किया, उनको मैंने सारी स्टोरी सुनाई कि हम साइकिल को प्रमोट कर रहे हैं, आप हमारे पार्टनर बने। तो अगर हम यहाँ पर हमारे पास 50,000 स्टूडेंट है, अगर वो आते हैं सेटिंग पे तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन थोड़ा सा ये काम करें कि अपनी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाइड करें, क्योंकि हमारे बच्चे चाहते हैं कि साइकिल थोड़ी सी फैंसी होनी चाहिए। वो जो रवायती साइकिल है वो मैंने खराब साइकिल खरीदी, बात है बेटी मेरी ने मुझे पापा इस पे आप जाएंगे इसके देने का साइकिल होगा। तो मैंने कहा चलो इसमें मैं ट्रक कार्ड करा लेता हूँ, कुछ बेहतर कर लेता हूँ, मुझे कोई मसला। तो मैंने उनको ये भी मशवरे दिए। अच्छा, अब जब मैं पार्टनर ढूंढा तो मेरे दिल में था कि लोकल इंडस्ट्री ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बहुत से। अच्छा, उनके एक मालिक थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मेरी पूरी बात सुन के कहता कि आप साहब मैं कल आपको जवाब दूंगा। अगले दिन मैंने फिर बात की, मेरी बात सुन के कहता है अब साहब आजकल मेरे हालात जरा डाउन है, तो मैं ना 3-4 दिन बाद आपको तावन करूँगा। तावन से क्या मराद है, तो पैसे पूछे दूंगा आपको। उसके दिन में और फिल्म चल रही कि ये कोई डोनेशन मांग रहा है। तो वहां से मैंने थोड़ी सी थोड़ा बैकग्राउंड देखा, तो वो पिक ही नहीं कर रहे थे मॉडर्न टाइम की चीजों के, वाइटी एंटरप्रेन्योर उसी में लगे। आगे उनकी नेक्स्ट जनरेशन शायद डिजिटल टेक्नोलॉजी में आए, नए मार्केटिंग पे आए, ये नया एनवायरनमेंट सिस्टम मैं उनको पार्टनर नहीं बना सका। ये मेरा प्रैक्टिकल इंडस्ट्री जितनी बड़ी इंडस्ट्री को आपने टच किया ना, आपने एक यूनिवर्सिटी का यूज किया, आपके पास पाकिस्तान में 200 यूनिवर्सिटी का यूज किया, आप उसको 200 यूनिवर्सिटी का यूज किया नहीं किसी भी साइकिल इंडस्ट्री वाले को वो लेफ्टिनेंट भी थे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते। पहले तो उनका ये था कि आपको हमारा नंबर कैसे मिला, आप कौन है, आप क्यों करना चाहते हैं, क्लियर फैक्ट। बट आई वुड से कि आप उनको 200 यूनिवर्सिटी का यूज केस बिल्कुल होने के ये पहली यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे दें, इसके बाद हर यूनिवर्सिटी ये करेगी। अच्छा, इस पे हम प्रोसीजरल डिबेट्स करते हैं। हमारे साथ जाम अयाज साहब मौजूद हैं जो कि चीफ आर्किटेक्ट हैं आईयूबी के। तो मैं सर आपका सवाल थोड़ा सा ट्रेड करूंगा, और मैं आप उनके यहाँ आर्किटेक्ट को देख रहे हैं, तो आप स्मार्ट होम्स को क्या समझते हैं और आईयूबी किस तरीके से रोल प्ले कर सकती है या कर रही है स्मार्ट होम की तरफ? बेसिकली स्मार्ट होम से पहले हमें समझने की जरूरत है, बल्कि बेसिकली जो हमारा एसडीजी प्लान है दैट फोकस ऑन सिटीज। बात करना है स्मार्ट सिटी, हम बात करेंगे तो लास्ट में याद करिएगा श्योर जरूर ऐड करूंगा उसमें हम एज ए स्मार्ट, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है मोर देन 6,000 स्टूडेंट है कैंपस सब कुछ इस लाइक सिटी शहर की तरह, और हमें इसकी मास्टर प्लानिंग के शहर की बॉडी चाहिए ताकि फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हम एज आर्किटेक्ट को हम सिटी को हम फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन वी डिफाइन सिटी। और अगर हम बात एक सिंपल सी करें उसमें बैठे हुए कि एक सिटी को और विलेज को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। मेरी सेंस अगर के मुताबिक सिटी इज ए प्लान सेटलमेंट और सेंट्रल कॉम्बिनेशन all state facilities. That is definition of city. अब जब इस पैरामीटर को अप्लाई करते हैं अपने किसी भी सिटी के ऊपर, हम बात करें when हम बात करें संभाल के, because Sambal is the only planned city of Pakistan that was designed by the studies. At that time only Sambal Shah also probably plan that come still because master plan as per my information CD capital government is the student of that master plan और उसमें उनको बहुत से चैलेंज भी फेस करने हैं। चैलेंज वाज दैट अगर आपने बहुत अर्ली स्टेज सामान किया हो, जब हमारा सामान नया बना था ह्यूज खुले वार्ड पर सेंटर में छोटा होता 20-25 फुट का ह्यूज बैट्स, उसके बाद हमारे सेक्टर्स
और एक ग्रीन ब्लू एरिया था दैट वाज विद द होल सिटी। तो एट दैट मोमेंट जो हम हाई रिस्क स्क्रैच पर जो आप ऐड हो रहे हो सब कुछ नहीं था। एट दैट मोमेंट बहुत से लोग ऐसे थे तो कहते थे कि ये दैट इज द बेस्ट इन द लाइफ। ये कौन सी बात है कि आप सेक्टर को बड़ा करते हैं, आप यहाँ पे मकान बना दे, आप यहाँ फ्लैट बना दे, तो इस तरह की रंगरस चीजें चलती रही। बट द सीडीए वाज स्ट्रिक्ट एट द मास्टर प्लान। अब जब हम ने उसको इन 2010 समथिंग जब हमारे पास बहुत बड़ा कैपिटल ऑपरेशन हमारी 5 टाइम एनहांस हुई, तो डेफिनेटली हमने फिर दोबारा मास्टर बनाया और मास्टर प्लान के अंदर हमारे पास क्वेश्चन था कि हम अपनी रोड्स को किस तरह वाइडर कर सकते हैं, प्री सिग्नल कॉरिडोर हम कैसे बना सकते हैं, और सब कुछ वो हमने किया जो आज से 50 साल पहले 60s में जो मास्टर प्लान डिजाइन किया। और नाउ जब सिटी बन चुका है एज पर सेट वेल वेल प्लेस्ड फॉर नेक्स्ट 50 ईयर, 50 साल के लिए हमारे पास सब। और मजीद बात ये कि आप उसका डीपली स्टडी करें तो उसमें ये होगा कि आपको जोड़ी होगी, रेजिडेंशियल एरिया सेपरेट आपको मिलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया आपको सेपरेट मिलेगा, आपको फार्म हाउसेज एरिया सेपरेट मिलेगा। तो उसके सर्विसेज पे फोकस है कि अगर पॉपुलेशन लिमिटेड है तो इसको जो वाटर हमने इनिशियली कहाँ से दे रहा है, सबरी डैम होगा खत्म हो गया तो कानपुर डैम का बनेगा, कानपुर डैम खत्म हो गया तो उसके बाद हमने शुद्ध पानी को उसमें कहाँ पे लेके आना। क्यों? ग्राउंड टेबल वाज ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि आप वहाँ पर 400 फीट के ऊपर अगर आप बोर करते हैं और आपके लक है कि अगर आपको पानी का थोड़ा सा बोल मिल जाए और वो भी बोल जब आप निकालते हैं तो पता चलिए घंटे के बाद हवा आने शुरू पानी खत्म, क्योंकि रॉकी एरिया है। तो रॉकी एरिया में ज़्यादा पानी पोसिटी होती नहीं है, तो जो आपको एक 1000 ऑफ ईयर्स से लगा एक सिस्टम बनाया होता वो हमें सब का पीछे पता। तो ये सारी वो चीजें थी जो एट द टाइम ऑफ प्लानिंग जिसने उस शहर को प्लान किया उसने ये सारे फैक्टर्स उसके देख के 100 साल की प्लानिंग करके वो मैप उन्हें दे दिया और उसके ऊपर हम उसको फॉलो करते हैं। तो आज हम 50 साल के बाद और अगले 50 साल हम उसकी शहर की बिल्कुल प्लान को टोटल करने की कोशिश करते हैं। बैक टू माय बेसिक स्टार्ट, शहर की डेफिनेशन जैसे मैंने की है, तो बेसिकली इस वक्त हमारे पास जो सिटीज हम बन चुके हैं हमारे पास दोज आर नॉट सिटीज, बेसिकली वो एक स्लम बन गई है। वो ऐसे बन चुके हैं कि सिटी जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया दैट इज बेसिकली फॉर सर्टेन पॉपुलेशन। हर शहर की एक लिमिट होती है। जब एक अर्बन प्लानर आया आर्किटेक्ट कौन प्लानर डिजाइन करता है बताता है कि आपका ये शहर आपकी 5000 6000 10,000 5 मिलियन तक की पॉपुलेशन को कैटर करेगा। इसके बाद यू नीड टू डेवलप फॉर यू सिटी। आपने नया शहर आबादे हैं, आपने नया शहर आबाद करने हैं, नया शहर बनाने हैं, बजाय इसके इसी पे सब पे लोग जा रहे हैं। And the basic question is why city develop? City develop हो क्यों रहे हैं? The basic reason is urbanization, migration from the rural to urban. That's the basic phenomenon. And the same is happening with the third country to the third country. ये migration का process है जो all over the world जहाँ वो चल रहा है। और इस phenomenon को solve करने के the only way is कि हम जो facilities हैं, जो causes हैं, जो reasons हैं, जो कुछ factors हैं, जिसकी base हमारी population migrate कर रही है, उनको हम we should provide at those factors. से कि जैसे डेवलप कंट्रीज जो फैसिलिटी डेवलपिंग कंट्रीज अगर वो फैसिलिटी डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोवाइड करेगी तो माइग्रेशन बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज दैट एंड सेम इज द केस कि अगर हमारे मुल्क के अंदर विद इन द कंट्री अगर हमारे पास लिमिटेड संवाद है, लाहौर है, कराची संवाद है, ऐसे सिटीज है, अगर वो फैसिलिटीज जो एक आम नीड है जैसे रोड है, एजुकेशन है, कारोबार है, बिजनेस है, और बहुत सी चीजें अगर ये हर सिटी के अंदर इसको डेवलूशन करके वहां तक पहुंचाया जाए तो सेम विल बी हैपन कि हमारे जो छोटे शहरों से बड़े शहरों में अल्टीमेटली वहाँ जो प्रेशर है, लोड है, और उसका जो इम्पैक्ट पॉपुलेशन का है वो डेफिनेटली भारतीय पे आता है। जैसे शुरू में हमारे देश की बात की पॉपुलेशन इज द मेन रीजन, आई थिंक आपकी बात है दैट्स ट्रू, पॉपुलेशन इज द मेन फैक्टर, लेकिन वी कांट स्टॉप इट। हम तो स्टॉप नहीं करते, हम सजेस्ट करते हैं दूसरे, बट व्हाट कैन डू इट कि हम एटलीस्ट उस पॉपुलेशन पैटर्न करने के लिए हम रीजनल सीबीडी कम्युनिटी बिजनेस मॉडल शुड बी एट रीजनल लेवल, वहाँ पे हो जहाँ पे हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे, जहाँ पे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे। तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारे पास माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट ब्रेक करेगा, रूल्स के ऊपर निकल प्रेशर रिड्यूस होगा, पॉपुलेशन को प्रेशर रिड्यूस होगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन का सिस्टम शुरू होगा। अब आते हैं कि अब एक शहर एक बेसिकली सिटीज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेसिक सिटी। सर हम थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे क्योंकि पैनल बहुत बड़ा है हमारा। नहीं अच्छा है, आप देंगे लेकिन थोड़ा शॉर्ट कर देगा। तो चलिए मैं इसको नैरो डाउन करूंगा और मतलब
basically मैं अब direct smart city पे आता हूँ. Why smart city? Basically again the phenomenal increase in the population. पैटर्न हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 70% पॉपुलेशन हमारी गाँव में अर्बन में गाँव और 30% पॉपुलेशन हमारे शहर में. मैं 30 होता हूँ. Now the pattern has been changed. अब नया स्टेटस आप देखें तो आपको ये 30-70 रेशियो मिलेगा. अब ऑलमोस्ट 40-60 रह गई और 2050 में ये रिवर्स हो जाएगा. ये 70% आपका अर्बन हो जाएगा, 30% अर्बन रह जाएगा. तो 70% को कैटर करने के लिए we need new city, not only city, we need smart city. स्मार्ट सिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसा सिटी जो हमारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम कुछ बात कर रहे थे, हम डेवलपमेंट की, इट्स नॉट ओनली डेवलपमेंट की बात नहीं है, ठीक है. डिजिटल टेक्नोलॉजी हम दे, उसके साथ साथ वी हैव टू फोकस ऑन आवर सर्विसेज, वी हैव टू फोकस ऑन आवर ट्रांसपोर्टेशन, वी हैव टू फोकस ऑन आवर स्पोर्ट सिस्टम, वी हैव टू फोकस ऑन आवर हेरिटेज कल्चर. हेरिटेज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह हम न्यू कंस्ट्रक्शन, न्यू एडिशन, न्यू चीजों के अंदर की हम अपनी कल्चर हेरिटेज को मेंटेन करते जा रहे हैं. अगर हम एग्जांपल है यूरोप की वेस्टर्न कंट्रीज की ले, उन्होंने ग्रो किया है बट देयर हेरिटेज इज साइड बाय साइड. अर्बन कंजर्वेशन का कांसेप्ट नाम है उनकी चीज के अंदर कि जहां पे उन्होंने नया शहर बात की है, साथ में पुराना अगर वहां पे उसको उन्होंने रिविटलाइज किया, उसको रिहेबिलिटेट किया अपार्ट टू द पर्पस. तो सेम पैटर्न शुड बी डन. हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है. हम नया शहर बने बट विद द कांसेप्ट कि इस रीजन के अंदर हम बता रहे हैं वहाँ पे कल्चरल वैल्यूज, वहाँ पे हमारा इंडिजिनस मटेरियल, वहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी, वहाँ पे हमारा क्लाइमेट, ऑल दीज फैक्टर्स विल मिला के वी कैन से कि दिस इज आवर एक स्मार्ट सिटी. अब बात करें लास्ट आपको क्वेश्चन, सॉरी, स्मार्ट होम्स. स्मार्ट होम इज द ड्राइव फ्रॉम स्मार्ट सिटी. स्मार्ट होम कैसे हम उसको ये डिफाइन कर सकते हैं? जैसे कि ए होम which is totally reflection of the family who's living in it, with its cultural values or environmental aspects and financial point of view and as well as for their maintenance expenditure. इन सारे aspects हम मिलाएंगे. अगर वो उस घर के अंदर reflect हो रहा है तो we can say this is a smart home. अब आपने याद IUB आते हैं. IUB पे हमने basically IUB as per as an architect, मैं समझता हूँ इस्लामिया उसकी बात को, especially the BCCI campus and including all other campus, they are like a city, एक शहर की तरह. तो हमने इसका ट्रीट भी एक शहर की तरह किया हुआ है. तो we have developed a master plan जिसके अंदर देखने को शायद विजिटर ये कहेगा कि 40% एरिया डेवलप्ड है, बाकी 70% या 60% एरिया पैरेलल है. बट अगर मेरे पास मास्टर हो तो प्लान होता तो मैं शो करता कि हमने उसकी फ्यूचर प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर्स 50 इयर्स में हमने रखी हुई है. हमारे प्लान में शामिल हुआ कि गेट नंबर 1 से हम एंटर होते हैं फ्यूचर, जिस तरह हमारे पास स्टूडेंट का लोड बढ़ चुका है, हम नई बिल्डिंग डेवलप करने जा रहे हैं. दैट्स व्हाई इन आवर प्लान कि हम इसको ट्रेडिशनलाइज करेंगे. और हमारा गेट नंबर 2 हमारा नया जो प्रपोज करेंगे दैट इज द व्हीकल कॉरिडोर, जो व्हीकल मूवमेंट भी होगा. एंड फ्यूचर आवर एक्सटेंशन ऑल बिल्डिंग्स विल बी एट अप इन दैट एरिया. और ऑल बिल्डिंग विल बी ग्राउंड प्लस 2, नॉट बिकॉज़ हमने वर्टिकल एक्सटेंशन में जाना है टू सेव आवर लैंड एंड अदर रिसोर्सेज. वर्टिकल पे जाते हैं आपका मटेरियल कॉस्ट बचती है, आपकी लेबर बचती है, आपका टाइम बचता है, ऑल दिस फैक्टर. तो बताने का मकसद ये कि सारी चीजें एस्पेक्ट हमने अपने प्रोग्राम कैंपस के मास्टर प्लान में अंडर द विजन ऑफ द वाइस चांसलर, हमारे वाइस चांसलर ने इसको रिवाइज किया. हमारी कैंपस डेवलपमेंट कमेटी है जिसको प्रोफेसर लोग बैठते हैं और वहां में उस प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं. वहां से फुल लेकर उसकी पार्ट कैंपस को. वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच. मैं रिजवान साहब को भी शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने ज्वाइन किया. मैं अब आऊंगा निशांत कुरैशी साहब की तरफ जो कि इस्लामाबाद से हमारे पास आए हुए हैं और CEO हैं निम्स के. तो सर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमें ये गाइड करें कि SDG 9 और 11 को हम आपस में लिंक कैसे कर सकते हैं और किस तरह लिंक करके हम अपनी सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं. I'll go back to what my fellow from commerce said. Entrepreneurship actually it bridges a lot of gaps. हम तो लिमिट नहीं कर सकते just this part. कौन सी वो बुनियादी चीजें हैं. स्मार्ट सिटी की बात है, हमारे बच्चे एजुकेशन की बात की सर. आई टेक द पॉइंट ऑफ बोर्ड और मेरा कुछ यूनिक है थोड़ा सा काम करियर. मैं एकेडमिया से भी लिंक हूँ, मैं इंडस्ट्री से भी लिंक, मैं स्टार्टअप से भी लिंक, मैं टेक्नोलॉजी से भी और ह्यूमन डेवलपमेंट से. अच्छा अभी करंटली मैं आज सर आपने कैंपस में कुछ चेंजेस किए. आई एग्री टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट
बिल्डिंग जो नहीं बनी होगी It's about water. जी वो ये भी आप Yes, sir. मेनली फॉर दैट कि क्लासेस थिएटर के हिसाब से बनाएंगे Yeah, exactly. We can that. अच्छा अब मैंने वहाँ कॉम्प्लीमेंट किया मैं रिपीट कर देता हूँ मैं 10वीं में पढ़ाता हूँ पर उनसे अच्छी ठीक है आई लाइक द फैक्ट वहाँ पे हाइब्रिड मॉडल कहीं भी अप्लाई हो सकता है ठीक है ठीक है बहावलपुर सिटी में मेरा पहला ट्रिप है जिंदगी में से पहले नहीं आया ठीक है हमने बात की हेरिटेज की तो मैं पाप याद है पूरे शहर में हूँ कल आइसम पढ़ूँ मैं कैंट का सारा एरिया घूमा पहले ना रिक्शा कहीं वगैरह यहाँ पे है नहीं तो ठीक है दूर भाग गए उसकी कंजर्वेशन कितनी खूबसूरत है मतलब डिनर वगैरह वहीं पर किया था heritage conservation यहाँ पर की जा रही है if we work on that marvelous so far but I think जो मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोगों से मिलकर एकेडमिया के पर्सपेक्टिव से मनान साहब से भी बात हुई एंड कुछ इरादे हैं उनके हमने से डिस्कशन उसकी की है बच्चों की एजुकेशन को इम्प्रूव करना इंडस्ट्री से लेकर जो गैप है उसमें बहुत काम कर सकता है और मैंने तीन साहब से मुलाकात हुई तो मालूम की थी एक बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं बच्चे जब यहाँ से निकलें तो जॉब की तरफ रुझान जरूर हो लेकिन थोड़ा सा वो भी लाने चाहिए मतलब मैं माजरत चाहता हूँ मैं बगावत का ऐलान करके आया हूँ बच्चों से कह करके आया हूँ सेकंड ईयर के बच्चे थे मैंने सेकंड किया थोड़ी साल में ऐसे ऐसे जन के बच्चे यहाँ से निकलने से पहले फिलहाल शुरू करो अभी से और यहाँ से निकलो तो जॉब की फिक्र ना हो ना कमाते हो ठीक है because we don't want people to be relying on others there should be self-sufficient जब बच्चे खुद काम करते होंगे खुद कमाएंगे तो फिक्र नहीं उसका सोशल इम्पैक्ट है जब उनको पेट भरे हुए होंगे उनके अपनी को परचेजिंग पावर होगी तो उन्हें किसी का हाथ मारने का सोचेंगे बल्कि जिंदगी को एंजॉय करना है देखिए हमारा और वेस्ट का क्या गैप है उनकी फिक्रें कम है हमें दूसरी तरफ जाना है तो बजाय कि हम किसी की जेब काटें खुद मेहनत करके कमा लें स्किल सबको बढ़ाएं I had a session with the big kids के फिर मैंने ना रिक्वेस्ट की तमाम फैकल्टी मेरे साथ थी मैंने कहा आप लोग लड़की में बच्चों के साथ खेला छोड़ मैंने कहा कोई बुरा मत बनाइएगा मुझे 10 मिनट चाहिए और मुझे जैसे निकले मैंने और तरीके से बात की मैंने कहा मैं आपके साथ एग्जाम में फ्यूचर में शिकायतें करे मुझसे मैंने इतनी शिकायतें की माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा they had some complaints with the institute itself तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं कर दो मुझे बता दो शिकायतों की नौयत इस्लामाबाद से मिलती थी या ये डिफरेंट थी सर इंसान सब जगह एक जैसे हां मेरा पॉइंट ये है majority of that would be is the generic the complaint which is pretty much understandable सर डिफेंसिव हां ठीक है क्योंकि देखिए जब तुम खुले दिल से खुले दिमाग से बच्चों से बात नहीं करेंगे दे विल नेवर कम ठीक है उन्होंने कहा हमने प्रैक्टिकल नहीं किया आई बी वेरी हमने प्रैक्टिकल नहीं किया मैंने फीडबैक दी थी साहब लेकिन मैंने बच्चों को सोल्यूशन दिया मैंने कहा आप लोग डिजिटल मार्केटिंग पढ़ मैंने कहा मुझे बताया गया कि बच्चों ने एक ट्रेंड जो है ना वो ट्विटर पे चलाया ठीक है जो अभी जो करंट ट्रेंड बड़ा मशहूर है मैं नाम नहीं लेता उसके बाद सबसे टॉपिक होता तो मैंने सबको पहले ना कंग्रेचुलेट था बहुत अच्छा बहुत मजा आया आपसे बात अच्छा लगा अब मुझे बताओ ये किया कैसे सर अपने फोन से किया था तो मैंने कहा फिर लैब की क्या जरूरत है यू हैव द पावर इन योर ओन हैंड्स व्हाई वुड यू नीड दैट उस पे आप फोकस करें सॉल्यूशन सिर्फ तो आपने बात की सर माइंडसेट की ना करते सर वो हमने चेंज करनी है ना जब हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे मनान साहब से पिछली बात थी मैंने कभी हम ऑडिटोरियम में बैठे थे तो मैंने कहा सर इन बच्चों को मैनेज हम नहीं करेंगे ना अब अगर एकेडमिया का रोल इवॉल्व हो गया है तो एक्सेप्ट करें तो सर ये बताइए कि पॉलिसी सजेशन क्या देंगे आप सजेस्ट क्या करेंगे ये तो हो गई इसके अलावा और ये तो चलिए सर मैं लिंक की चीज वगैरह एक तो थैंक यू वेरी मच आपने रेज किया है उसके अलावा मैं आईयूबी की मैडम ने बहुत ज्यादा बताया फीचर्स के बारे में कुछ पॉइंट की जरूरत नहीं है एसडीजी के बारे में वो कि हमारी साइंस है एजुकेशन है इसके हवाले से अगर जाएंगे फॉर एग्जांपल 36 यूनिवर्सिटीज में से आईयूबी यूनिवर्सिटी हो रहा है और 3 यूनिवर्सिटी जैसे कि तो साइंस है और उनमें से स्मार्ट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट जो है इन सालों के अंदर
बाकी solution की तरफ आते हैं, जैसे यहाँ पर जो बात हो रही है प्रॉब्लम की हो रही है और एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रही है, यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप है और स्मार्ट सिटी है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ों में एक जो कॉमन चीज़ है ना वो है स्मार्ट सिटी के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा लिंक है टेक्नोलॉजी के हवाले से। दो तरह के इशू हैं, एक तो ये कि क्या हम इनोवेशन ऐसी लेकर आ रहे हैं जो हमारे ग्लोबल पॉलिसी एंटरप्रेन्योर्स आर सपोर्ट की और ग्लोबल पॉलिसी, ठीक है, और दूसरा जो है क्या वो इनोवेशन जो अवेलेबल है भी सही, उसकी ऑप्शन भी हो रही है कि नहीं। तो एक साइंटिफिक साइड है, जिसकी सोशल साइड, तो सोशल साइड इसकी है, अगर हम उसको देखते हैं कि उसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे इन्होंने बड़ी एडवांस किस्म की एक्सपीरियंस किया और बिजनेस से रेलेवेंट है, लेकिन यहाँ पर उसकी अभी एप्लीकेशन एक है कि हमारा बिजनेस प्लान शुरू तैयार है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी मौजूद है, रिसोर्स मौजूद है, लेकिन ऑप्शन नहीं। दूसरी साइड ये है कि जो हमारे लोकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिलिकॉन वैली से नहीं है, बट हमारा जो ब्रॉडबैंड के इंडस्ट्रीज है उसकी कोई प्रोडक्शन के अंदर वो कमी आ रही है, उसको कोई बाहर से आकर स्टडी कर रहे हैं उनके लोगों में। अब इसको लिंक करने की जरूरत है, और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट लिंक है वो ये कि हमें इंडस्ट्री के पास सबसे पहले जो जाना चाहिए वो इसलिए जाना चाहिए, हम हमें आपसे कुछ पैसे नहीं चाहिए, हमें प्रॉब्लम्स है कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम लेने का उसका फ्रेमवर्क यहाँ मैं बात करता हूँ। हमारे पास एक प्रॉब्लम है ना, तो हमारी जो रिसर्च और एजुकेशन है इट शुड बी ड्रिवन बाय दोस प्रॉब्लम, ठीक है। हमारा जो मेरा जो स्टूडेंट है वो चाहे वो इंजीनियरिंग का है, चाहे आर्किटेक्चर का है, बच्चों ने यहाँ पर एक बाइक कॉल लगाया स्टूडेंट्स, तो मैंने उनके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, उन्होंने बड़ा जबरदस्त मुझे एक्सप्लेन किया है प्रोजेक्ट। मैंने उनसे पूछा कि किसे सेल करोगे, ठीक है, उनको नहीं पता था क्योंकि दे नो इनोवेशन, दे नो टेक्नोलॉजी, बट दे डोंट नो आर्किटेक्चर। इसी तरह से इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरी कोचिंग में चले जाते हैं, हमारे बच्चे मेहनत भी करते हैं, टीचर्स भी उनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। यही बच्चे अगर इंडस्ट्री का प्रॉब्लम इन हैंड उनके पास आ रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है टीचर, तो कुछ ना कुछ जरूर एक छोटे से लेवल पर उसमें प्रॉब्लम को निकाल है, जिससे एक फर्म को हो सकता है फायदा होता है। तो एक इस तरह से इनको रीडिफाइन करने की जरूरत है हमारे। इसके लिए एक फ्रेमवर्क जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ जैसे मुख्य ऑडिट का जो रोल है बहुत ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको अगर रीस्ट्रक्चर कर सकें, एक पॉलिसी सजेशन है वो ये है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो मुख्य इंडस्ट्री के लोग हैं, स्मार्ट सिटीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक नुमाइंदा वहाँ से है और एग्रीकल्चर की भी प्रॉब्लम है, डिस्कस कर रहे थे, तो हर एक एरिया से एक इंडस्ट्री का नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और टॉप रिसर्चर यूनिवर्सिटी के जो सबसे हाई इम्पैक्ट फैक्टर्स हैं आर्किटेक्चर के वो भी वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। वो एजेंडा सेट करें हर सेमेस्टर में, एक मीटिंग करें कि ओके जी इस सेमेस्टर के अंदर आप क्या सजेस्ट करते हैं, हमारे जो लाइफ साइंसेज है वो किन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करें, हमारी जो मीटिंग जो है वो किन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करें, लोकल प्रॉब्लम आपने उनको बताएं, ठीक है, और वो फिर चले जाएं आर्किटेक्चर के अंदर और वहाँ पर जाकर आप ड्राइव करें बच्चों को उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर टीचर, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर हम कोई अच्छा सोल्यूशन निकाल सकें तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डेवलप हो जाएगा लोकल लेवल पे, जो कि आगे के प्रोजेक्ट जाएगा। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो इंडस्ट्री और एकेडमी एक दूसरे के करेंगे आएंगे और ये दोनों प्रॉब्लम जिनका मैंने जिक्र किया दोनों सॉल्व होंगे। उसकी मैं थोड़ी सी बड़ी सबकी एक बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन लेने जा रहा हूँ। सर ने कहा कि मैंने सौराब को कांटेक्ट किया, उसने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, आप लोग भी सौराब को कांटेक्ट करते इसलिए आपको रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है। आपकी तरफ से जो नुमाइंदा जाता है वो यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप का प्रोफेसर होता है पॉलिटिकली, वो भी हमारी बात सुनना चाह रहा है, अगली आप लोग कोशिश ये करें कि आप अपनी तरफ से भी हमारे जैसा जो 70 साल का 40 साल का न्यू PhD हो, हम भी कोशिश करते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी से अपने 2 बंदे लेते हैं। आप लोग जिस सेट को आप लोग टच कर रहे हैं ना वो सेट नहीं बदले, एग्री सर? ठीक, मैं जी आज एक टफ्टाइल बंदा बेच गया, मैंने 7 साल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में घर बनाते हुए, यंग बच्चे थे 22 साल के, उन्होंने कह दिया हमारे साथ टफ्टाइल ले लें, मैंने कहा मैं आपसे नहीं दूंगा, वो एक सेट पैटर्न उससे लेता हूँ, मुझे उधार दे देता है, मुझे फिर हम कैसे कारोबार करें, मैंने कहा तुम करो सामने डी से बनता है 40 लाख करवाना, हमारे पास अभी तुम्हारा है, तुम जो लाहौर वहाँ से ना ऐसी टफ्टाइल लेके जो लाहौर के करो,
टफ टाइल और नॉर्मल टाइल के रेट के बीच में 200 और 2000 का फर्क है। तो तुम सिर्फ डिजाइन चेंज कर लो, मोल्डिंग वही रहेगी। इस डीएचए को तुम आज टाइल बेचना शुरू करोगे, 5 साल बाद तो इस डीएचए की नीश मार्केट को सिर्फ तुम टफ टाइल बेचोगे। दैट इज व्हाट वी कैन टीच एनीवन एट एनी टाइम। प्रॉब्लम क्या है कि हम जब इंडस्ट्री के टॉप के बंदे के पास जाते हैं ना, देखें वो अपना ड्राइवर भी चेंज नहीं करेगा हमारे लिए। आप एकेडमिया है, मैं सेठ हूँ ना, तो मैं आपको समझता हूँ कि आपको सिर्फ किताबों का पता है, आपको क्या पता कारोबार कैसे। Agreed, sir? Strongly. So the problem lies here. To haven't solved the problem, मैं इस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हूँ। I did my bachelor's from this university. I did my master's from NAS. But there was a hell of a difference between these 2 years, but I passed in NAS. ठीक है जी। Openly मैं आपसे कहूँगा, हमारा relative grading system यहाँ पे नहीं है, वैसे में competition की आदत है। जब मैं NAS में गया तो उन्होंने मेरे अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि मेरे अंदर तक 100% तो उन्होंने निकाला है मेरे से। I wasn't being as a student, मैं आपको बता रहा हूँ कि I wasn't being able to get a leave for 3 days of a fever in 11 months. अगर मैं 3 दिन के लिए बीमार होता तो मैं फेल होता। Create a competitive system. करिकुलम में कुछ गलत नहीं है, किसी चीज में कुछ गलत नहीं है, कंपटीशन दे दे, इस बच्चे को स्ट्रेस हैंडल करने का दे दें। उसके बाद जरूरी नहीं ये प्रॉब्लम आज सॉल्व करेगा, हम भी तो 15 साल बाद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमने 15 साल हमने फेलियर नहीं देखे हैं सर, कुछ नहीं हुआ, रद्दी की टोकरी में गए हमारे प्रोजेक्ट भी सारे। आज भावलपुर का पहला, सॉरी मेरी बात आखिरी ऐड कर दूंगा, भावलपुर का पहला यूज केस बेस कंस्ट्रक्शन हॉल मैंने डीएचए के सामने दिया है। आई नो माय कि मैंने किसको बेचना है, इसके अंदर बैठेगा कौन। मॉल बनते थे यहाँ पे आज से पहले यूज केस बेस। द एजुकेशन गिव्स यू समथिंग, बट द टाइम हो जाती है चीजें, आज नहीं होंगी कल हो जाएंगी, लेकिन आप लोग भी अपनी तरफ थोड़ी सी मेहनत करें। हम अपनी तरफ करते हैं, सेठ को अप्रोच ना करें। डॉक्टर मरियम भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं। हम हाजिर हैं, आपके भागलपुर के किस किस बंदे को मिलना है इंडस्ट्री में, हम आपको बताएंगे इसको मिले, आपका बस आप अगले दिन आप कुछ सोल्यूशन बेच के आएंगे। जी डॉक्टर मरियम। अभी उन्होंने कहा कि स्टूडेंट की तरफ हमें सबसे पहले आता है नो, अगर हम उन्हें की तरफ लेके जाएं, उस नो की ना जो रूट कार्ड होती हैं उसके ऊपर मैंने काफी वर्किंग भी की है, और आगे मैं उसको बच्चों की तरफ सेशंस वगैरह की तरफ भी मैं कर रही हूँ, बच्चों में इम्प्रूवमेंट आए। तो मैंने 5S मतलब के इंट्रोड्यूस भी किया, इंडिकेट की गई 5S पे अगर हम काम करें, लाइक अ स्टूडेंट में सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करें, सेल्फ असेसमेंट क्रिएट करें, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये 5S जब उनके तक आ जाएंगे तो की फैक्टर जो एंटरप्रेन्योरशिप के होते हैं, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, टॉलरेंस जो है ना, ये हमारी आज की जनरेशन में बहुत हिस्सा लेते हैं। हम इधर उन्हें बता देते हैं आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और कहते हैं नो, क्यों नो, आप उसको टॉलरेट करें, आप स्पेकुलेशन को नापसंद करके आप हेजिंग की तरफ आ जाए, अल्टरनेटिव की तरफ आ जाए। तो मैंने इसमें काफी वर्कआउट भी किया, और अब हम अपने डिपार्टमेंट में अपने स्टूडेंट्स के साथ, मुझे बात हुई थी एकेडमिया में डिपार्टमेंट लेवल पे हम इससे वर्कआउट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को हम ये सेशंस के थ्रू हम उनके अंदर ये मोटिवेशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस दौर से हमारी इकोनॉमी गुजर रही है, हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से हमारे सामने देखें तो हम बहुत ज्यादा इस वक्त ऐसी हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं कि जिसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और उस ट्रांसफॉर्मेशन में ये हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्शन सबसे बेस्ट है, लेकिन इसके लिए हमारी प्रायोरिटी कौन सी चीजें होंगी, वो भी पीछे हमारे वही गोल आते हैं जो हमारे गोल है कि हम अपने क्वालिटी एजुकेशन को दूर करें, और पहले हम अपने हंगर को दूर करें, क्योंकि हंगर और पॉवर्टी हमारा बेसिक है और ये आपस में एक लिंक है, और इसका एक फ्रेमवर्क बना के हमें स्टडी करना है। और हम अपनी रिसर्च का एमफिल और पीएचडी जो कि हाई क्लासेस होती हैं, जहाँ हम उनको इसी एरिया में हम उनको रिसर्च टॉपिक दे रहे हैं, और बिफोर अ सेमेस्टर हम जो है ना इसके ऊपर पूरा वर्कआउट करते हैं कि करंटली वो जैसे कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या हम उसको देख रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं, तो उन डिफरेंट प्रॉब्लम के सिनेरियो में हम उसके ऊपर वर्कआउट भी करते हैं, और जो हमारे टॉपिक होते हैं हम उसको भी उसी के अकॉर्डिंग लोकल इशू, हमने पिछले 5 सालों से लोकल इश्यूज को एड्रेस करना शुरू किया, और मेरा अपना पूरा पीएचडी का वर्क लोकल इश्यूज पे ही था।
तो ये लोकल इशू को हम डिस्कस करेंगे, तब हम ये जो स्टूडेंट्स की तरफ से या एक हमें नो आता है, ये नो हमें नहीं आएगा, हम इसको एड्रेस करेंगे। हम उनको मोटिवेशन सेशंस के थ्रू भी हम उनको जो है ना मोटिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक डाटा आया है कि पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, तो मेरे सामने एक जो फिगर आया मेल फीमेल रेशो का, तो ये मुझे बहुत लो नजर आया। मींस कि फीमेल का ट्रेंड टुवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम है, तो हमें उसे भी प्रमोट करने की जरूरत है थ्रू द एम्पावरमेंट। तो उस पे भी काम हो रहा है, वो फिर हमारा फिर 5 SDG की तरफ आता है। तो ये जो 9 और 11 SDG है ना, इससे पहले वाले जो SDGs है ना, उनके ऊपर ज्यादा इन माय व्यू ज्यादा वर्क करके हमसे इस तरफ मूव कर सकते हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट और हमारी फैकल्टी ऑलरेडी इन पे काफी वर्क कर रहा है, और इंशाल्लाह हम इन 9 और 11 की तरफ भी हम मूव किए होंगे। मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहा हूं। मैं पिछले 6 साल से दुनिया से लिंक हूँ और इंडस्ट्री से काम करके आज तक एंटरप्रेन्योरशिप माइंड के साइड के साथ कुछ चेंज होता है। लेकिन मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की अपने बिजनेस एक्सपीरियंस के अंदर, क्योंकि हम जहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इतनी एफर्ट हो रही है, हर जगह पे हो रही है, लेकिन फिर भी क्या वजह है एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं, इनोवेशन या जो हम बात क्यों नहीं करते। अच्छा देखिए, हम उस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं जहाँ पर माइंडसेट हमें एक्चुअली पेरेंट्स की ग्रूमिंग करने की बहुत ज्यादा। अच्छा, हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी में, जब वो 7वें सेमेस्टर में पहुंचता है उसे कहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बन। जब उसने 7वें तक ये सोचा था मैंने नौकरी करनी है, जॉब करनी है जनाब। अच्छा, हम बच्चियों को पढ़ाते हैं इसलिए कि वो नौकरी अच्छी कर लेगी, उसका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। हम उसी डे 1 से इस बात पे एजुकेट ही नहीं करते कि आप बिजनेस भी कर सकती हैं, आप हजरत खदीजा वाला भी जो रोल प्ले कर सकती हैं, आप भी बिजनेसमैन बन सकती हैं। तो हम एक्चुअली ये काम हमें स्कूल एजुकेशन से शुरू करना पड़ेगा। आई वाज इन दुबई एंड मैं वहां पे स्कूल सिस्टम पे उनको स्टडी कर रहा था, तो मेरा कजन था वहां पर पढ़ रहा था, ग्रेड ही वाज इन अ ग्रेड 5 और 6। तो उन्होंने कहा भाई हमारी एक एक्टिविटी है, हमें स्कूल के अंदर ये असाइनमेंट मिली है कि आपने स्कूल के अंदर एक होटल बनाना है छोटा सा। हमने और हमें ग्रुप्स बना के दिए, तो हमने 4 से 5 बच्चों के ग्रुप के अंदर हमने थोड़े पैसे कंट्रीब्यूट करके, तो वहां पर एक छोटा सा वो आइटम हमने सोचा जो यूनिवर्सिटी की कैंटीन से नहीं मिलता, तो वो हम लेके आए, फिर हमने उसको सेल किया और उसमें से मैं प्रॉफिट लाया और एक रिपोर्ट बना के दी जिसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। हमने उस स्कूल ने उस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्लेस के ऊपर कहा भी आपने वहां पर डिस्प्ले करना और एक दिन आपने सेल वहां पे। अच्छा, अब हम यहाँ पर अपने बच्चे को किसी स्कूल में कह देते हैं तो अपने बच्चे को ये वाला काम करने के, हमने उसको टाक्षा बेचने के लिए बनाया, उसको एजुकेट करना है यूनिवर्सिटी के अंदर भी। जब हमारे पास बच्चा पहले दिन आता है, हम उसको इस मतलब हमने डे 1 से नेशन के ब्रांच में इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फलां बनना है, उसको जॉब्स माइंडसेट के साथ तैयार करना है, उसको बताया नहीं रहे। पहला दौर था, मतलब एक जगह पे आपको चले जाए, आप बच्चों को जो है ना वो खरीदो फरोख्त के लिए ना बचपन से लोगों को लगा देते हैं, आप नए मार्केट में जाकर परचेसिंग करें, ये काम करें, वो लॉस भी करता है। लेकिन हम तकरीबन तो 7वीं 8वीं तक बच्चा पहुंच जाए तो उसे पैसे देकर बाजार देकर नहीं भेजेंगे यार, सामान से लेकर नुकसान करके आएगा। तो जो बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन पता क्यों बनता है, तो उसको डे 1 से लगा देते हैं, वो उसको बता देते, वो कहता है 2 लाख भी नुकसान करेगा। मैं अपनी फैमिली में बताता हूँ, बच्चा वो फिट गया भी अपने पेरेंट्स से कहता रहा मुझे 4 लाख रुपए दे दे, मैंने बिजनेस करना है, और अगर नहीं पुत्र तू आएगा डिप्लोमा कर, इस्तेमाल नौकरी कर दिया आपने। तो हमें एक्चुअली थोड़ा सा पेरेंटल ग्रूमिंग के ऊपर बड़ा फोकस करना पड़ेगा। हम एफर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन जब उसके पास टाइम बड़ा थोड़ा रह जाता है, क्योंकि उसने 7 8 3 साल ये सोच लिया होता है यूनिवर्सिटी में मैंने जॉब करनी है, और आखिरी साल आके हम उसे कहते नहीं तुम बिजनेसमैन बन जाओ, तो वो कंफ्यूज हो जाता है और वो जो स्किल है वो उसको भी छोड़ देता है और वो दूसरी तरफ आसिफ साहब थोड़ा साइड पर तो रिजवान के पॉइंट को बड़ा पर्टिनेंट सा पॉइंट उठाया आपने पेरेंटल ग्रूमिंग, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के अंदर इनग्रेव्ड है ये चीज कि हमने बच्चों को अपने पाल की यही पढ़ा गया कि ये मेरा बेटा नौकरी करेगा, नौकरी के बाद उसको छोकरी मिलेगी। ये सेक्स है, डॉक्टर इंजीनियर सिंड्रोम हमारी सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करता है। हमने हमारी सोसाइटी के अंदर हमने ये मान लिया हमारे पेरेंट्स ने कि ये बिजनेस करने का काम या शेखों का है या परियों का है या
वो कराची के मेमन। ये लोग और जिनके बच्चों के ऑलरेडी फैमिली बिजनेस I left my job at the age I mean, of 30 and I started business. you must be one of those rare entrepreneurs जो कि आज otherwise last की definition आज clear करूँगा सबको. Entrepreneur is a risk taker. Entrepreneur is a responsible person. These traits are born. ये किसी ने नहीं बनाया, आप लोग गलत लोगों को blame कर रहे हैं. तो अब आप बहुत बड़ा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है ना वो ग्रूम होके क्या आ रही है कि आपकी इल्माम की बात ठीक है, आखिर में आपको पता चलता है यार 3-4 साल का एंटरप्रेन्योरशिप वाह जबरदस्त मार्क जबरदस्त बन जाएंगे और जनाब मल्टी मिलियनर और कोई एक ऐसे हम मैं शायद आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर देखें, अगर हम इस स्टेज के ऊपर आप काम करते हैं तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है तो थोड़ी सी डिफाइन करके बच्चों को बताने की जरूरत है कि एंटरप्रेन्योरशिप का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपने अपना बिजनेस करना, तो आपने किसी धनिक बिजनेस को भी ग्रूम करना है. तो वो ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जो आप सोसाइटी में देखते हैं तो वो नीचे जा रहा है, तो आप उस टीम का पार्ट बन के उसके अंदर पॉलिसीज ऐसी डिफाइन करके उस बिजनेस को भी ग्रूम कर सकते हैं. लेकिन हमने एक्चुअली जॉब समटाइम ये होता है कि हम जॉब को भी गाली समझने लग जाते हैं. तो कोई भी बिजनेस है हमें अपने जो यंगस्टर हैं उनको भी थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर सर एग्री करेंगे कि अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो ही इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर. जॉब तो डिसिप्लिन है. अच्छा सर एक बात ऐड करना चाह रहे हैं. देखिए हम माँ बाप को पकड़ के क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, हम जो इंडस्ट्री में बैठ के काम कर रहे हैं हमें वो पूरा करें. एकेडमिया की बात, यूनिवर्सिटी की बात, आज मैंने सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को कहा कि बाकी बनना बेसिकली फाइनेंशियली डिपेंडेंट दे नीड दैट. अब कब तक बच्चों को इसलिए है कि मैं अपनी मिसाल दिया करता हूँ, मैंने अब्बा से कहा मैट्रिक के बाद मैंने जॉब कर करते हैं आप कैसे काम कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं इंटर नहीं बेटा आप नहीं कर सकते, मैं काम कर रहा हूँ दिस बैक ऑफ. तो अभी जब आप बीकॉम किया रिजल्ट आने से पहले मैंने वीजा लगवा लिया, मैं भाग गया पाकिस्तान. He did not know मैं पाकिस्तान से जा रहा हूँ, 1 लाख रुपए उधार किया चले गए, खुद किया था, ठीक है, रिस्क लेना चाहा तो कर लिया ना. लेकिन पॉइंट ये है कि अब जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर उनको तो हमें सिखाना है ना. अगर हम उनको ये कह रहे हैं कि वालदैन को ठीक करेंगे तो वो फिर बैठे नहीं क्या. मैं यहाँ पे दुकान साहब की बात लेकिन एक और बताएं वो इस तरह से की बात है वो उसमें ये कि अर्ली एजेस से बच्चों को समझ सके. बिल्कुल. और ये पॉसिबल इस तरह से कि जो पेरेंट्स के अंदर वीकनेसेस होती हैं जो नॉलेज उनके पास नहीं इसलिए तो बच्चों में बेचते बच्चों को, ठीक है. तो यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा काम है स्कूल लेवल से लेकर उसको ऑब्जेक्टिव स्टार्टअप से करना नहीं है, उसको ऑब्जेक्टिव वो एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस देना बच्चे को होता है कि एक अनसर्टेनिटी एक प्रॉब्लम उससे आपको कैसे डील करना है, एक्सप्रेस कैसे कंपाइल करना है, आपको टीम कैसे बनानी है, तो वो सारे प्रोसेस से गुजरता हुआ है. दूसरी चीज इसमें ये कहूँगा जैसे आपने कहा कि जो टीचर है उसको बिजनेस का पता ही नहीं है. मैं ये कहता हूँ कि मैं टीचर को पता है, टीचर वाले को पता है, किसी को और हर एक को पता होना चाहिए, ठीक है. और वो हर एक को कैसे पता चलेगा जब हम एक स्कूल लेवल के ऊपर एजुकेशन ले आएंगे. और दूसरा जो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन में जैसे आप एजुकेशन प्लस हमें करना पड़ेगा कि हर डिग्री के साथ एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन इस मॉड्यूल के तहत चलाने पड़ेगी जो इफेक्टिव है. और उसकी मैं आपकी बात खत्म करता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन जैसे आपने ग्रेड्स की बात की, आपने इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है. पहले मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजें मौजूद है लेकिन ऑप्शन नहीं है. 2001 से पहले जो है वो बिजनेस एजुकेशन पढ़ाई जाती थी, एजुकेशन का नहीं तो पता कैसे पढ़ाई. तो कॉन्सेप्ट आया फैक्ट्रिएशन का. फैक्ट्रिएशन एक ऐसी चीज जो पढ़ाती है कि एवरीडे एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करते हैं, जो हर बंदा हर बच्चा जो है वो कर सकता है, वो स्कूल लेवल के ऊपर पढ़ाई जाती है. दूसरा जो कॉन्सेप्ट आया टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप का 2011 में स्टैनफोर्ड से ये सारा मेथड है वो वहाँ पर डेवलप किया गया. और उसको लेकर इंटरनेशनल साइंस कॉम्पिटिशन है उन्होंने अपने हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट को उस प्रोग्राम से गुजारा ताकि जो उनका रिसर्चर है, जो उनका साइंटिस्ट है, उसको एक स्टार्टअप की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो इनोवेशन लेकर आ रहा है, टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, वो मार्केटेबल होना चाहिए, मार्केटेबल होना चाहिए. तो ये मॉडल्स मौजूद हैं. लोग इस बात की है कि हम इनको अडॉप्ट करें, स्कूल के अंदर हम एजुकेशन के ऊपर काम करें और यूनिवर्सिटी में हर लेवल के ऊपर यानी एग्रीकल्चरिस्ट है वो रिलायंस वाले हैं सबको दिया जाना चाहिए. हमारे प्रॉब्लम्स क्या ज्यादा है.
then we need interview. जैसे मैं थोड़ा साइड अच्छा, इसको थोड़ा सा एक सॉरी मैं बात कर रहा हूँ। एक तो ये कि ये हमारा जो पैनल सबसे बड़ा पैनल था, मेरे ख्याल से ये हमने थोड़ा सा नाइंसाफी कर दी। ये पैनल 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से वो जो एक ट्रू स्पिरिट के अंदर जो हमने मौका दे रहे हैं, कोई बात नहीं लेके और आपको बस टाइम नहीं वो सही कह रहे थे। अच्छा मैं भी जी नहीं आप सही साहब सही कह रहे हैं, मैं भी सही कह रहे हैं। हाँ मैं थोड़ा टाइम चाहूंगा। तो ये कि हमें थोड़ा सा क्यों कट करना पड़ेगा क्योंकि हम सुबह से सेशन चल रहे हैं, तो बाकी भी बार बार आ रहा है कि आप उसको शॉर्ट करें। तो उसके लिए हम दोबारा से इंशाल्लाह प्लान करेंगे। तो मैं जाऊंगा आसिफ तनवीर साहब की तरफ कि वो कुछ स्टेट्स शेयर करना चाह रहे हैं। वो काफी देर से मैं रुक के बैठा था, वो सारे अपने अपने वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। तो उसी हवाले से कुछ डेटा है, जैसे सर आप कह रहे थे कि बच्चे कहते हैं नो। तो एक रिसर्च हुई, यानी कि हमें पता लगा कि ऑन दी एवरेज यानी कि 18 ईयर तक जो है वो हमारे एक बच्चे को, पाकिस्तानी बच्चे को मिनिमम 1 लाख दफा कहा जाता है कि नो। तो जब उसको हर दफा यानी कि हर जगह से रोका जाता है तो इवेंचुअली वो कहते हैं नो, कि वो स्टेप क्यों ले, उसकी पर्सनालिटी कैसे। इसी तरह से मिसाल के तौर पे इनके सॉल्यूशन अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम्स की बात है, यानी कि पाकिस्तान में बेतहाशा प्रॉब्लम्स है। इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बेतहाशा है, शायद किसी और कंट्री में हो। तो इसी वजह से बहुत सारे जो है ना वो इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। और यानी कि मैंने वो पढ़े हैं फैक्ट्स एंड फिगर के, अभी किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने $1 करोड़ लेके बैठा है, कोई $10 करोड़ लेके बैठा है, उन्होंने पाकिस्तान के इन्वेस्ट करना, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। सिमिलरली यानी कि जैसे सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स की बात करें तो सिंगापुर में स्कूल एजुकेशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। सिंगापुर में लास्ट ईयर उन्होंने खत्म कर दिया ये ग्रेडिंग सिस्टम जो है। वहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगे और उनके सॉल्यूशंस बच्चे जो है वो लेके आएंगे। और थ्रू आउट उनके स्कूलिंग्स के अंदर यही होगा कि प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस, ताकि उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो सके। क्योंकि उन्होंने असेस कर लिया कि फ्यूचर में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे कि हर टाइम आप नए सॉल्यूशंस की तरफ आप लोग देखते रहेंगे कि आप ये रट्टा सिस्टम या इस तरह से एजुकेशन सिस्टम कुछ काम नहीं रहेंगे। जैसे वो ऑस्ट्रेलिया की बात है कि जैसे मैम ने बिल्कुल सही, एक एंटरप्रेन्योरियल पर्सनालिटी होती है, क्रिएटिविटी है, रिस्क टेकिंग है, बाकी सारी चीजें हैं। जैसे वो कहते हैं कि आईक्यू की जगह जो है ना ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, वो ज्यादा अब सिर्फ उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि वो कामयाबी देती है। हाँ जी बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे स्कूल्स लेवल पे ये सारी जो है वो चीजें ये सिखाई जा रही है, ना सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, बल्कि वो कहते हैं कि पर्सनालिटी ऐसी होगी कि जो अडेप्टेबिलिटी होगी, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक अडेप्टेबल हो सके, इनोवेशंस लेके आ सके, चेंजेस लेके आ सके। हर टाइम जो है ना, इवन कि गवर्नमेंट के इदारों के अंदर हर टाइम जो है ना अब आपको नई चेंजेस लेके आनी पड़ेगी। तो एक ऐसी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए। तो वो इसी तरह से सोच रहे हैं, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरे यानी कि यूरोप और वो बाकी सारे। अच्छा अब हम क्लोजिंग तरफ जा रहे हैं। मैं आखिर में सोहेब भाई की तरफ जाऊंगा क्योंकि सोहेब भाई को मैंने टाइम प्रॉपर नहीं दिया। अब सोहेब भाई टाइम खींचते रहे, नहीं मिला नहीं उनको। तो मैं चाहूंगा सोहेब भाई इसको एंड करें और आप काइंडली अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें और वो कुछ पॉलिसी सजेस्ट करें कि जो समझते हैं कि हम उसको इंक्लूड करें, अपने इसका पार्ट बनाएं, तो हम एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये हमेशा स्टूडेंट में ये कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड क्वांटिफाई हाउ मच एंटरप्रेन्योर्स यू नीड इन नेक्स्ट 10 इयर्स। पाकिस्तान के प्रॉब्लम पिछले 20 साल में भी हल नहीं हुए। पहले हम पिछले 20 साल के प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट करने सकते हैं, हमें कितने प्रॉब्लम्स हल करने हैं। 200 यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी को कहे ना कि प्रॉब्लम हल करनी, कितना देर लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हम अगले 10 साल में कितने प्रॉब्लम्स आएंगे, बिकॉज अब हमारा सिर्फ इंडेक्स होगा, मैम बहुत अच्छे उसमें बता सकती है कि अब हमारा पॉपुलेशन इंडेक्स ग्रो हो रहा है। ग्रोइंग इंडेक्स कौन सा है, जैसे सर ने आर्किटेक्चर का बताया कि वो सड़क बड़ी थी अब छोटी हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ी है और कुछ भी नहीं हुआ। सेम टाइम आप सब लोग पॉपुलेशन को मेरी बात सुन के उसको एक बुरा समझना शुरू हो गए थे। इंडिया एंड चाइना आर कैपिटलाइजिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ, इट्स एन अपॉर्चुनिटी इज वेल। अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर आप उसको बूस्ट कर सकें तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। इफ यू कैन, अगर आप उसे संभाल ना सके तो वो आपको यूज करें सर पॉपुलेशन। Everybody can use. I can also use. Political awareness is not created. It's unprecedented in Pakistan. I agree with you. I agree with you. Everybody is doing his part. But I'm not. Anyway, you don't be defensive. मैं इसमें थोड़ा सा मैं बहुत ही ज़्यादा sometimes आप समझिए कि मैं बहुत ज़्यादा extraordinary excited हो जाता हूँ चीज़ों में।
और ओवर कॉन्फिडेंट आपको लगूंगा. The thing is, I can say everybody can be Imran Khan. आप एक इमरान खान को आइडलाइज करते हैं. Everybody can be Imran Khan. उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं. But he was the top player of this century. He was the top philanthropist of this century. He's going to become the top politician of this century. उसके पास भी एक ही जिंदगी थी, उसके पास भी 24 घंटे. मैं फिर वही बात कहूंगा कि जब प्रॉब्लम्स बड़े होते हैं तो उसके लिए जागना भी पड़ता है, लड़ना भी पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है. तो आप लोगों के प्रॉब्लम बड़े, आप माशाल्लाह बहुत बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस करें. हम तो सुबह की रोटी का पड़े. I don't want to comment on that. Want to, देखिए, this can be factor something. मैंने तो जैसे एग्जांपल को मैं ये कहता हूँ कि हर कोई अपनी जिंदगी में national security is on the stake. देखिए जब वो political, I'm just saying as an example. I would say like चलिए आप उसे छोड़िए, आप तो स्टार he also had the 24 hours. आप डॉक्टर अमजद साकिब से मिले होंगे, he had 24 hours. तो मैं ये कहूँगा everybody can do it. You don't want to stay on container all the time. All the time. Agree. थोड़े इसका टाइम नहीं है हमारे पास. हमारे प्रॉब्लम ज्यादा है. तो I would say मेरा जो आखिरी इस एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल के बारे में कहूँगा, हम लोग ज्यादा क्या करें राइट नाउ. हमारे टीवी चैनल्स बता रहे हैं, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि भी एंटरप्रेन्योरशिप. मैं 7 साल लगा के एक प्रोफेसर का बेटा था, मैं एंटरप्रेन्योर कर रहा हूँ. मुझे पता है कितना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है. इसके लिए आपको लड़ना पड़ता है अपने आप से, घर से, बाहर से. हर कोई नहीं लड़ सकेगा. अहमद जब्बार एंटरप्रेन्योर इसलिए नहीं बनना चाहेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक इंडस्ट्री है. Why he should go to other business और वहाँ पे जाके शरारत करेंगे? ऐसी है ना. I can disagree with you. Maybe. Statistics can say कि हाँ जो उसके पास पहले से सब चीजें हैं, so maybe he will not take the risk. Maybe. तो इसलिए हमें हर बंदे को नहीं करना चाहिए. मेरा ये इसमें राय है कि हमें पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए how many entrepreneurs we need in next year. और आप लोग भी एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस कर रहे हैं. आपके 100 में से 10 हो रहे हैं तो आपकी स्टैनफोर्ड है. आप उसका स्टैट को उठा के देखिए, क्या उसका 100 का 100 स्टार्टअप बनाते हैं? नहीं. क्या उसके 100 के 100 लोग MIT के लोग जो से हैं वो एंटरप्रेन्योर हैं? नहीं. उनके भी 10 ही है भाई साहब. आपके 10 अगर है तो आपकी स्टैनफोर्ड है. आप क्यों परेशान? जिसने बनना उसने बन सकती. मेरा ये इसके वेरी गुड. बड़ा अच्छे तरीके से. जी सर आप अच्छा बता सकते हैं. तो सस्टेनेबल सिटी पे थोड़ी सी ओके. सस्टेनेबल सिटी पे थोड़ी चल. और उसमें मैं एक क्वेश्चन भी छोड़ के जाऊंगा जस्ट ठीक. आंसर नेक्स्ट सेगमेंट में. ठीक हो गया. अच्छा सस्टेनेबल सिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? कौन सा सिटी सस्टेनेबल? तो सोच नाम से हमारे पास तो सवाल है कि इस सिटी की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये सिटी का उसकी बायो कैपेसिटी से एक्सीड करती है, दैट इज नॉट सस्टेनेबल. और जिसका विद लिमिट है वो सस्टेनेबल. ये प्रैक्टिस मैंने IUB में की, कैलकुलेट किया. तो मैं IUB का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है इसकी बायो कैपेसिटी से ज्यादा था. तो अब रिकमेंडेशन क्या है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम हो. इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैसे कम होगा? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है एक कंपोजिट इंडेक्स है रिसोर्स के यूज का, एनर्जी, वाटर, प्लास्टिक, पेपर, जितने भी हैं जिससे पोल्यूशन जनरेट होती है. अच्छा अब एक नेसेसिटी है कि दुनिया के एक शहर जिनकी वर्टिकल ग्रोथ, उनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम, इनकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ सिंपल जो वेस्टर्न यूरोप की सिटी है दे आर 40 to 30% एनर्जी एफिशिएंट एंड सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, US तो सब काम एक हमारे सामने कोई चीज है. अगर सिटीज को हमने सस्टेनेबल करना है, स्मार्ट सिटी की तरफ जाना है, तो सिटी की साइज लिमिट करे, उनकी वर्टिकल ग्रोथ इंश्योर. इसके लिए जैसा भी कहा कि मास्टर प्लान, तो IUB में यही किया कि पहले मास्टर प्लान लेके गए और उसको इंश्योर किया कि हम फर्दर ग्रोथ क्या हो वर्टिकल भावलपुर का मास्टर प्लान अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है. मैं आपसे भावलपुर का मास्टर प्लान अभी तक नहीं. तो तमाम सिटीज का मास्टर प्लान होना चाहिए. भावलपुर का भी क्योंकि अगर आपके पास एक्सपेंड कैसे करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने ऑर्गेनाइज ना किया तो आप एनर्जी एफिशिएंट नहीं हो सकते, वाटर एफिशिएंट नहीं हो सकते. अब से आखिरी सवाल आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इंडस्ट्री से क्वेश्चन. जी 20 सालों में एक प्रॉब्लम. मेरा प्रोफेशनल कैरियर यूबी लॉ से 20 साल के अंदर मैं जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है उसका मुझे सोल्यूशन अभी तक नहीं करता. हमारा इंडस्ट्री ग्रुप बैठा है तो मैं अप्लाई कर सकता हूं.
थाउजेंड ऑफ ईयर्स से हमारे इस रीजन में कंस्ट्रक्ट होती है, ट्रेडिशनल मटेरियल, ट्रेडिशनल टेक्निक्स इस्तेमाल होती है, और वो ट्रायल एंड एरर की मेथड की बेसिस पे से होता है, एंड दैट वाज सो मच कंपैटिबल विद अस। वो मॉडल जो था ना, कंस्ट्रक्शन में मॉडल कंपैटिबल था, उसमें एनर्जी एफिशिएंसी भी थी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी थी, हिस्टोरिकल ऑफ सब कुछ हेरिटेज था, इस सब वो मॉडल पॉलिश हो चुका था, तो यहाँ कहीं नहीं मिलता। मैं उसकी रिवाइवल जाता हूँ ऐसे बात, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन 1000 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा घर, मैं चाहता हूँ मैं उसमें क्या इंडस्ट्री मुझे मटेरियल प्रोवाइड कर सकती है। सर मैं जगह भी दूंगा, मटेरियल भी दूंगा, लेकिन नहीं मटेरियल में डिफाइन कर सकता हूँ, मटेरियल में सुन ले, मटेरियल्स में ये है सर, उस वक्त मटेरियल दैट वाज नॉट सीमेंट प्लास्टर, दैट वाज लाइम प्लास्टर, दैट वाज लाइम वाटर लाइम प्लास्टर, ऑल दिस मटेरियल। सर मैं आपको उसके ऊपर पूरा करूंगा, लेकिन बस इसके बाद हम सेशन अलग से प्लान करेंगे। सवाल का जवाब के साथ जी, जी, सवाल है, जी, उसकी हाँ, ठीक है। रेलेवेंट में इसका जवाब भी देता हूं। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। हम क्यों नहीं आप निकल पाएंगे, मैं उसकी आपको जवाब भी देता हूँ। आप कंट्रोल शेड की मुर्गी को बाहर कितनी देर रख सकते हैं? आपने मुर्गी कंट्रोल शेड में रखी, आप सर्वाइव नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंट करके देखने से उसका कर लें आप, इसी में रह चुके हैं, आप उस घर में अगर रह सकते हैं तो मैं आपको जगह देता हूँ, आप अपना घर बना रीजन ये लें। है with him on that, तो हमने बात की ब्रेक लीडर ऑफ इंडिजिनस अब कर क्लोज कर। क्लाइमेट चेंज की वजह से बैठा था ना, वो जो भाई थे प्रेजेंटेशन, वो लड़ रहे थे अब्दुल, सुना छिड़ा रहा है। अब वो सही कह रहे थे कि इकोलॉजी जो है वहाँ वो उसको लेकिन जो आप कह रहे हैं हमसे ठीक है। आप करना चाहेंगे तो जगह मेरे से में मटेरियल देना मेरे से में, एक घर आप बनाएंगे। टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन Bhatti, close कर। should be technology should be based on Okay, again, design should थैंक be यू on सो मच, technology. बड़ा मजा आया। ऑल दो अभी अभी हमने इसको मजे को सही तरह से टेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा पैनल बहुत बड़ा था और मेरे ख्याल से इस बड़े पैनल के लिए टाइम भी बहुत चाहिए था। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा से प्लान करेंगे, फुल फ्लैश डे इसलिए रखेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम इसकी ट्रू सेंस के अंदर, इसके स्पिरिट के अंदर इसको हम डिबेट कर सकें। तो अब ओवर टू मैडम आमना, मैडम अरीबा, सॉरी डॉक्टर अरीबा, मैडम आपके ओवर। Thank you very much, Shaheer. But I'd like you to announce that all the participants are to receive their certificates as well. So please announce their names. I'd also like to call Dr. Shahid, Dr. Shahid Durrani and Professor Dr. Rubina Bhatti. Please come here and award the certificates to all the panelists. Director IUB Green Campus, Dr. Abid Gill sir, please receive you. Manan sir. वहां से ही आ रही होंगी सही। चीफ आर्किटेक्ट IUB जाम अयाज साहब। वाइस प्रेसिडेंट बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अहमद जब्बार साहब। अहमद जब्बार साहब। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिप्रेजेंटेटिव शुएब अरशद साहब। सुहेब अरशद साहब। डायरेक्टर IT रिजवान मजीद साहब। डॉक्टर मरियम अब्बास, लेक्चरर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। सर अब्दुल मनान साहब, लेक्चरर एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट। जिशान क्रैशी साहब, CEO NIMIS NIMS।
Mohammad Asif Tanveer Saab, lecturer, Department of Entrepreneurship. नहीं था शहीद रिजवी फकीर भाई के साथ मुलाकात Thank you so much. Thank you. Thank you very much, madam. Thank you, sirs. Please take your seats. This marks the formal initiation of the closing ceremony. I am Dr. Riba Khan, and we have reached the final chapter of our most exhilarating and profound dialogue on sustainable development goals. The whole day prolific activity was not only engaging, but also very much beneficial for the students, the faculty, and all the stakeholders alike. So we at the Islamia University of Bahawalpur would like to express our gratitude to all the speakers and all the panelists for their thought-provoking talks and their most valuable contributions to the dialogue. Thank you very much. Now I would like to invite Mr. Saad Usmani from the SDGs Academy to present a concise talk on database. Please. Assalamu alaikum. My name is Saad Usmani, and I am working as a product manager for the development of the SDG database in Seaway Technologies. Seaway Technologies is an IT company and a technical partner for the development of the SDG database. I remember when I first met along with my CEO, Mr. Syed with Mr. Ahmed Jafri, his vision was clear as anything, that he wanted to make a database which can become one of the biggest database of Pakistan. And let me assure you one thing, that this database has a potential to become one of the biggest database of Pakistan. All the stakeholders like government, private organization, NGOs and donors are going to witness that this database will become one of the biggest database of Pakistan, inshallah. Thank you so much. If you cannot measure, you cannot do anything. So there is no dashboard of SDGs in Pakistan. There is no database of SDGs in Pakistan right now. We have made a humble effort, and today we are going to demonstrate you the SDG database of Bahawalpur. The data we have collected is from the government of Pakistan. Government of Pakistan has been very kind to us, and they have given us this data. And today he is going to show you about Bahawalpur. So we will take Bahawalpur city, and out of Bahawalpur city, we will take any one UC, because a UC-based database. This is the live data of Bahawalpur right now, and based on the statistics given to us by the government of Pakistan in 2021. So it's the latest one. So you can drive any data of Bahawalpur from any UC, and in that particular UC, you can pull data of any particular SDG. So what is the, I would like this data of Bahawalpur to be handled by the IT department of this university. This is the sole effort of SDG Academy of Pakistan with our partner organization, right? Why we are doing it? Because from this point onwards, we will update this data. So we'll give it to you, the link. So as Bhatti Vice Chancellor asked me to talk to you on this topic, and you will engage all these partners, and whatever you guys are doing in Bahawalpur, chamber, NGOs, any organization, in any SDG, you can put your data here. So we'll put a disclaimer. From this point of time, now we will try to update this data based on the feedback from the users, not from our, because you are the custodian of this data. So what is the procedure? You will be given a username, password. Can you show the username, password? You will apply for this username and password to SDG Academy, right? So the moment we'll have your application, we will give you the username and password. Only one condition: the organization must be registered anywhere, because we are not
take the responsibility of putting any irresponsible data in this. So it must be a registered NGO by the government of Pakistan. It must be a registered NGO from the Security Exchange Commission of Pakistan. So these are the first two entities we are trying to rely on. And once you give us the registration number, we'll verify it from the issuing authority. The moment it's verified, you'll get your username and password. The moment you get your username and password, now you can put data on it. Because then we'll be responsible, you'll be responsible. Alhamdulillah, I have the proud honor of managing the biggest databases of Pakistan. I'm the first grade 17 officer of Nadra. Even its name was not Nadra. It was back in 73. I joined the government service and I went there as a officer on deputation. So its name was National Registration Authority, made under the law of by the parliament at that time, National Registration Act. So I have the proud honor of establishing the first database in Nadra. Then the database you see on these airports of FIA is the biggest database right now. So I am the author of that database also, and even the MRP, machine readable passport. So with all that previous experiences, now I'm venturing into it. And we will like University of Bahawalpur, Islamic University of Bahawalpur, to lead this initiative from South Punjab. So the takeaway from our side is, from this one-day engagement since from morning to this time, this is the right place. Whenever I come here, I come with the expectation. I have a big team with me. I know all of you are tired, and I have also traveled to Multan immediately. We have a long relationship, so I have no worries in communicating with him. And BC has asked me to talk to him on this database. If you have any question on this database, it's basically the data of government of Pakistan, right? So the moment you get our login and password, you will start one. You know, the very importance of this is that the donors will approach this database. The organization will approach this database. The foreigners will approach this database. And then with all members of this database, I'll have a webinar with all of you. And this is my suggestion to Shaheer साहब आपको कि जितने लोग आज सुबह से engage हुए हैं, इन सब का एक WhatsApp ग्रुप बना लें. उस WhatsApp ग्रुप के अंदर पॉलिटिकल बात करना, कोई मजहबी बात करना, ईद मुबारक जुमा मुबारक कहने में स्ट्रेट अवे आप निकाल दें बंदे को. जी गुड मॉर्निंग के मैसेज, चाहे वो मैं भी करूं, ठीक है. ये बड़ी जरूरी बात है. उस ग्रुप का कोई ऐसा नाम रखें कि ये SDG एकेडमी और आपका जो यूनिवर्सिटी है उसका ये कंसल्टेटिव ग्रुप है. मैं आप तमाम लोगों को मतलब इनवाइट तो नहीं करा, वैसे आप खुद खर्च करेंगे. हम लोग स्वाद में जमा हो रहे हैं मालूम जब्बार PC के अंदर 17, 18, 19 को, ठीक है जी मैंने ख्वाब दिखा दिया. मेरा काम है ख्वाब दिखाना. सर मेरे कोई भी भ्रांति पैदा की, जब ये तय है कि मैं अपने पैसे खर्च करूंगा, आप अपने पैसे खर्च करेंगे, पैकेज में आपको बता दूंगा. इकराम साहब यहाँ बैठे हैं, वो आपसे बात करें, वो पीछे खड़ा है इकराम, तो आप उससे बात कर लें. ही विल मैनेज एवरीथिंग. तो ये इसलिए है कि वो 3 दिन हो गए. कब विद योर फैमिलीज वो रिट्रीट समझे अपनी आप ना. मैं आपके VC से बात की है, चैम्बर के लोग बैठे को स्पॉन्सर कर दें हमें थोड़ा सा, हम इनको कमरे भी ले देंगे वहां से. एक साहब ने अभी कहा था मैं फंड दूंगा तो वो घर बन जाएगा. जी मैं इसीलिए पहले क्या, देखिए बेसिकली मैं FIA से हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मेरी किस्मत क्या बात करनी है. अब मैं आखिर में आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा. मैंने जब भी मैं इस यूनिवर्सिटी में आया, मैंने बहुत मोहब्बतें पाई हैं यहाँ पे. और अब यकीन जान लें, अगर आपने पाकिस्तान को ऐसे बचाना है तो इन्हीं मोहब्बतों की जरूरत है. बहुत शुक्रिया आप सब. Thank you very much, sir. Now I would like to call the Dean Faculty of Social Sciences, Professor Dr. Rubina Bhatti, to please come to the podium for closing remarks on behalf of the Vice Chancellor. Please, Madam. Bismillahirrahmanirrahim. It is my great pleasure and honor to thank you all for arranging this wonderful and brainstorming session, a summit on SDGs. We chose 5 SDGs though, but there are total 7 SDGs.
So I would like to wholeheartedly appreciate the efforts of very honorable Qable-e-Ihtaram Janab Amar Jafri Sahab and Dr. Shahid Durrani and all the team under the leadership of the Vice Chancellor, Athar Mehboob Sahab. It has been wonderful session, very informative, very, we have learned a lot. And I must say that all the speakers in all the sessions, they have enlightened with their innovative ideas and practicable solutions to everyone. In the morning, we had a first session on good governance, and the panelists have given their views, their ideas, and wonderful recommendation. Then we had a session on climate change, then on, I'm not wrong, on cyber security, and then we have two combined sessions on entrepreneurship and smart cities, communities, and societies. So I'm so happy that we have been here together. That has been a multi-stakeholders activity, and people from various segments of life in society, they have joined us from academia, from chamber, from industries, from IT centers, and many others, NGOs as well. And above all, my students who are there, standing there since long. I have been looking at you since long. My dear students, you are the force. You are the agent of social change. So I'm not hopeless. I'm very optimistic that you will change the future, not only of Pakistan, but the whole global society. I'm really, really optimistic. Thank you all for joining us. Well, the brainstorming discussion during this session was on entrepreneurship and smart societies. I've been listening to many people's viewpoints, and the main point that was given by Mr. Syed, yes, he was raising the point of growing population day by day. Well, that is true. That is not only the problem of Pakistan, that is the global issue. But at the same time, if we see in Pakistan, it is very disappointing that our country is full of resources. And I would say that growing population is not the main issue. The main issue is the mismanagement of resources. I think we should work on that. As I've said that this is the multi-stakeholder task. So we have to utilize all the natural resources, all the other resources that God have given us, and including the human capital, the human resources, as we have been talking about innovations and entrepreneurship. So this is what we have to work upon. At the same time, various, discussion was held in a friendly environment, and people said discuss their experiences and observations. So what I've gathered that the other issue is the mindset and the behavioral issues. If we change our mindset and our behaviors about certain aspects of life and society, so we wouldn't find those problems as problems. Rather, we will get many solutions out of those problems. So this is my request, as some people said that go to Sarab and professor shouldn't go. A person like me, so this is all in the mind. So we should change the mindset. At the same time, parent was discussed as well. So that is also the mindset, that if I want my children to be the doctors, engineer, or scientist, or whatever, so why I don't want my child to be a good human being first? Because our main priority is not going on the other aspects, because many panelists have indicated that ending hunger, poverty, and maintaining peace is the main issue for the global society. So why we are not educating our children about such aspects, and that training should be started at home. And we are here at the university level, but parents, and at the same time, that responsibilities lies on the school teachers, school level system. But
I'm really astonished that many commissions have been established in Pakistan for maintaining the quality of higher education, but no commission, no such initiatives I have seen for the school level education. So that is surprising and astonishing me, that I want to build a strong and a high level of building, and our foundation is weak. How can we maintain such building? So these are the points that we should focus upon. I think that the database that Amar Jafri Saab has shared, that is his big contribution. I would like to have his link, and I think that Directorate of Student Affairs can launch that database, and then different login and password may be issued. And I think that would be really useful data for all of us. So thank you once again, all the participants, all the stakeholders, and all students for joining us. And on behalf of the Islamic University of Bahawalpur and the Vice Chancellor, the leader of this university, I'm really thankful to all. And I hope that soon we will have another summit, conference, or practical training workshops in near future, inshallah. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, madam. We would like to retain you for a little while, please. And I would also like to invite Mr. Amar Jafri, the founder and chairman of SDGs Academy, to join her. And Dr. Shahid Durrani, please join her for souvenir distribution. I would like to start from the participants. I would like to start from the participants and organizers of the SDGs Academy. Mr. Amar Jafri, the founder of SDGs Academy. Thank you very much, sir. Your passion has motivated us all. Thank you very much. Next, I would like to call Ms. Neelam Pari, the CEO of SDGs Academy and project lead. She's not here, so please. Thank you very much for receiving it on her behalf. Mr. Shah Rukh Khan, Program Manager, SDGs Academy. Mr. Asidur Rahman, SDGs activist. Now it is turn of the organizers of the SDGs Academy, Mr. Ikramullah. Please receive your souvenir. Mr. Zishan Qureshi as the organizer. Zishan, you've been collecting too many souvenirs. Mr. Fahad Iqbal. Mr. Adnan. Dr. Azim.
Okay, we'll give it to him later. Dr. Abdul Rahman. Ms. Sabah Nawaz. Mr. Saad Usmani. Mr. Mohammad Ahmed. Now I'd be calling the names out of organizers of the IUB, starting from Faisal Siddiq. Mr. Zunair Hashmi. Ms. Sunila Rashid. Ms. Manahil. Ms. Raheen. Dr. Shehzada Khurram, if we have him here. Okay, if he's not here, the next one is me, Dr. Riba Khan. Ms. Kalsoom Akhtar. And a huge round of applause for Mr. Shaheer Rizvi. Mr. Asif Tanveer. Please, sir, come on stage. You cannot avoid this on any cost. Mr. Asif Tanveer is a very valuable asset for the Institute of Business Management and Administrative Sciences. Mr. Abdul Rahman, President, Social Media Society. Mr. Muhammad Usman, President, Entrepreneurship Society.
Yes, now Dr. Azam, I heard he's back. Dr. Azam from SDGs Academy. MashaAllah. Mr. Rizwan Majid, Director IT. And now our main man, Dr. Shahid Durrani, the focal person. I would like to ask Dr. Shahid Durrani and Mr. Amar Jafri to please award the memento to Professor Dr. Rubina Bhatti. Thank you very much, madam, for joining us here. This gentleman, IT backend team, Great job, Wajid. Excellent gentleman. He has been supporting with the backend support, the technical. Thank you very much, ladies and gentlemen. This marks the end of our closing ceremony. I would now request all of you to please come outside for a group photo. Thank you very much. Thank you.